Hello my dear students. Now let us learn about damped oscillations. Now what are damped oscillation? Damping is when the amplitude of something goes on reducing, we call that it has a damped motion. मतलब क्या है, अगर हम लोग यहाँ रस्सी से एक बॉल को लटका देंगे और उसको मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर देंगे तो इट विल कीप ऑन ऑसिलेटिंग लाइक दिस. लेकिन क्या ये इसी एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करता रहेगा कंटिन्यूसली? नहीं. As the time progresses, it has to face the air resistance, because of which it loses its mechanical energy. उसका mechanical energy lose कर जाता है. इसके कारण क्या होगा? As the time progresses, the amplitude of the oscillation goes on decreasing. Oscillations का amplitude धीरे धीरे decrease होता चला जाएगा and ultimately it will come to rest. So such kind of oscillations, such kind of periodic oscillations in which the amplitude gradually decreases, okay, such oscillations are called as damped oscillation, and such oscillator is called as damped oscillator. So periodic oscillations of gradually decreasing amplitude are called as damped oscillations. Okay, so periodic oscillations of gradually decreasing amplitude are called as damped oscillations, and such kind of an oscillator is called as a damped oscillator. Okay, of example I have just now told you that if the simple pendulum, the amplitude of simple pendulum gradually decreases and it comes to rest because of the resistance faced, because of the air resistance that it faces. Okay, now अगर हमारे पास इस टाइप का एक अरेंजमेंट है जहाँ पे ये एक सॉलिड सपोर्ट से हमने क्या कर दिया है, एक स्प्रिंग हैंग कर दी. स्प्रिंग के एक एंड में वी हैव अटैच्ड अ ब्लॉक. A block of mass m is attached to a spring and it can perform oscillations vertically. Okay, now this block is connected to a vane, vane, through a rod, and this vane is dipped in a viscous liquid. Okay, now this block can perform oscillations. Okay, this block can perform oscillations, and during the oscillations what happens is this vane moves in the liquid, and because of this, because of the viscosity of the liquid, it loses its mechanical energy, and because of this the amplitude of the oscillations goes on decreasing with time. Okay, so this is a block spring arrangement. अब इस block spring arrangement में what is the force exerted by the spring on this block? The force exerted by the spring on this block is equal to minus k into x. We have already discussed this. So this is the spring force which is exerted on this block. So this is equal to minus k into x. K is what? K is the spring constant and x is the displacement. Okay. Now अब जब ये वेन इसमें ऑसिलेट करेगा ये लिक्विड में, it will face damping force. Okay, this damping force is directly proportional to the velocity. Damping force किसके ऊपर डिपेंड करेगा? It depends upon the viscosity of the fluid, and it has been found that this is directly proportional to the velocity of this vane, and this is equal to minus b into v. This is called as damping constant. Okay, तो ये damping constant है, and this Fd is equal to minus b into v. So what is the total force acting on this? Total force is equal to the sum of these two. So therefore this is equal to minus bv minus kx. Now force, as you know, is equal to mass into acceleration. This is equal to minus bv minus kx. इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे. ma is equal to ma plus bv plus kx is equal to 0. अब this is acceleration. So acceleration, as you know, is d2x by dt square plus b into velocity is what? dx by dt.
So this is dx by dt plus k into x is equal to 0. This is the differential equation that represents the motion of this block under the influence of these forces acting on it. Okay, so ये damped oscillation का ये representative differential equation है. Okay, now if we find the solution of this, मतलब अगर हम लोग इसको solve करते हैं, so we get the value of x, and that is equal to x is equal to a e to the power of minus bt upon 2m into cos of omega dash t plus phi. ओके, ये इक्वेशन सॉल्व करने पर हम लोगों को इसका ये सॉल्यूशन मिलता है. दिस x is equal to x, as you know, is the displacement. X is equal to a e to the power of minus bt upon 2m into cos of omega dash t plus phi. अब यहाँ से आप लोगों को ये पता चलेगा that ये जो इक्वेशन, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसका, मतलब damped oscillations are also simple harmonic motions. Okay, ये टर्म से you can make out easily that the damped oscillations are also simple harmonic oscillations. And what is this term? This term represents the amplitude. Okay, now इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि see, as the time progresses, the amplitude goes on decreasing. Okay, e to the power of minus bt. So because of this, we can understand that as the time progresses, the amplitude goes on decreasing. Now omega dash is the angular frequency. You can see here in this equation, omega dash is the angular frequency, and this angular frequency has been found to be equal to under root of k by m minus b by 2m whole square. Okay, this is the omega dash, that is angular frequency that is observed. So therefore, what is the time period then? Time period is equal to 2 pi by omega dash in this case. So this will be equal to 2 pi upon under root of k by m minus b upon 2m whole square. Okay, now you can see that time period, earlier what was the formula for time period? Time period is equal to t is equal to 2 pi upon under root of k by m, only this much. But now it is under root of k by m minus something. So that means what? Denominator छोटा है. अब denominator जब छोटा है तो t का वैल्यू कैसा होना चाहिए? ज़्यादा होगा. Clear? So therefore, in damped oscillations, time period increases, whereas amplitude decreases exponentially. Okay, we can see this in the graphical representation. देखिए, as the time progresses, amplitude goes on decreasing. Okay, so this is the damped oscillation. Damped oscillation is because of the loss of mechanical energy of the oscillating particle because of external resistances. Okay, external resistances can be, in case of the simple pendulum that we discussed, the external resistance is because of the air that it encounters, and in case of the liquid, it is the viscosity of the liquids. Here, so this is the damped oscillation. Next we see natural and forced oscillations. That is free and forced oscillations. Free and forced oscillations. Let us understand what is free oscillation. अब suppose हमने एक यहाँ सीलिंग से एक बॉल लटका दिया है by using a string. Okay, let us assume that this is a simple pendulum. Now इस सिंपल पेंडुलम को अगर मैं मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर दूं और छोड़ दूं, इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग. अब इसका जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगा, इसका जो ऑसिलेशंस होगा वो उसका फ्रीक्वेंसी कैसा होगा, उसका जो भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है. सो सच ऑसिलेशंस ऑफ अ पार्टिकल विथ इट्स natural frequency are called as free oscillations. Clear? So free oscillations are oscillations of a body with its natural frequency.
अब व्हाट आर फोर्स्ड ऑसिलेशन देन? फोर्स्ड ऑसिलेशन होता क्या है कि अगर ये जो बॉडी ऑसिलेट कर रही है इसके ऊपर हम लोग एक्सटर्नल पीरियोडिक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते जाते हैं तो क्या हो जाएगा? नाउ इट डज नॉट ऑसिलेट विथ इट्स ओन नेचुरल फ्रीक्वेंसी बट इट ऑसिलेट्स with the frequency of that external periodic force that is acting on it. Okay, so ये जो oscillations है under the influence of external periodic force with a frequency that is different from the natural frequency, ये oscillations को हम लोग बोलते हैं forced oscillations. Forced oscillation में the body oscillates with the frequency of that external driver. Okay, जो बाहर से जो चीज इसके ऑसिलेशंस को ड्राइव कर रही है उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से इट स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग. क्लियर? सो फोर्स्ड ऑसिलेशंस आर द ऑसिलेशंस ऑफ अ बॉडी और ऑफ अ पार्टिकल बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स एक्टिंग ऑन इट एट अ फ्रीक्वेंसी which is different from its own natural frequency. This is the forced oscillations. Now, अब suppose ये एक अरेंजमेंट हम लोग कंसिडर करते हैं. यहाँ पे हमने क्या कर दिया है कि 4 पेंडुलास यहाँ पे हैंग किए हैं. दिस इज ए बी सी डी. इसमें क्या कर दिया हमने? सॉलिड रबर बॉल यूज किया है एंड इसका और सी का लेंथ सेम है. ओके, बी का लेंथ इससे कम है, डी का लेंथ इससे ज्यादा है. हम लोग क्या करेंगे? इसको वी विल डिस्टर्ब फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन. सो वी विल सेट दिस इनटू ऑसिलेशंस. What will happen? This will start oscillating in a vertical plane with its natural frequency. These are called as free oscillations. अब इनको तो हमने oscillate किया नहीं, but what happens because of the transfer of this vibrational energy through the strings to B, C and D, they also start vibrating in the plane which are parallel to the plane in which A is vibrating. So ये जो वाइब्रेशंस है इनका फ्रीक्वेंसी कितना होगा? जितना कि ये ए का फ्रीक्वेंसी है. क्लियर? सच वाइब्रेशंस ऑफ दिस पेंडुलर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस ड्राइवर आर कॉल्ड एज फोर्स्ड ऑसिलेशन. सो दे ऑल स्टार्ट वाइब्रेटिंग. They start vibrating or oscillating at the frequency equal to the frequency of natural frequency of A. Okay. नाउ इस केस में एक चीज और देखने को मिलेगी. इसका और इसका फ्रीक्वेंसी सेम है बिकॉज देयर लेंथ्स आर सेम. यू नो द फॉर्मूला ऑलरेडी. सो सिंस देयर लेंथ्स आर सेम, देयर नेचुरल फ्रीक्वेंसीज आर सेम. नाउ बिकॉज ऑफ द इक्वालिटी ऑफ देयर फ्रीक्वेंसीज, द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन फॉर सी विल बी वेरी लार्ज. क्लियर? उसका जितना इसका जो एम्पलीट्यूड है वाइब्रेशन का, दैट विल बी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू the amplitudes of B and D. Okay, क्यों? क्योंकि इनका नेचुरल फ्रीक्वेंसी इसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच नहीं करता है. क्लियर? सो ये जो फिनोमेना है, दिस इज कॉल्ड एज रेजोनेंस. सो रेजोनेंस इज व्हेन द ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी इक्वल्स द नेचुरल फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ vibrating particle, then it starts oscillating at very high amplitude. Such oscillations, such phenomena is called as resonance. Okay, so जब resonance होगा तब very high amplitude is observed, whereas in this case the amplitude is lesser. Clear? So अगर हम लोग ऐसे बहुत सारे simple pendula लेंगे और इसको इसके साथ में forced vibrate करेंगे तो क्या हो जाएगा? हम लोगों को इस टाइप का एक ग्राफ मिलेगा. ओके, इधर क्या हो जाएगा? हियर वी विल सी अ पीक. अब ये ग्राफ किस किस का होगा? ऑन वाई एक्सिस वी विल प्लॉट स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड. ओके, एंड हियर वी विल प्लॉट फ्रीक्वेंसी. अब डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे देखो, वी विल सी डिफरेंट एनर्जीज. हाँ, एम्पलीट्यूड स्क्वायर विल रिप्रेजेंट व्हाट? एनर्जी. अब ये क्या पॉइंट है? ये वो पॉइंट है जहां पे द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस जो भी पेंडुलम रहेगा दैट बिकम्स इक्वल टू द ड्राइवर फ्रीक्वेंसी. ओके, सो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा? देयर विल बी रेजोनेंस. सो दिस इज द रेजोनेंस.
Okay, so this is the graph that we get for the forced oscillations. Clear? I hope you have understood damped oscillations as well as this resonance. This phenomena we will discuss in detail later on when we study waves. Okay, thank you very much for viewing this video. Keep watching.